पर्पस ऑफ ए टेस्ट। एक टेस्ट का जो है क्या पर्पस होता है, उसका मकसद क्या है। असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास इज इनवाइटेबल बिकॉज इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एक स्टूडेंट को असेसमेंट करना क्लास में वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक इंटीग्रल पार्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। Assessment on one hand provides information to design or redesign instruction, and on the other hand it promotes learning. Teachers use different techniques and procedure to assess their student. Test, observations, questionnaires, interviews, rating scales, discussion. A teacher develops, administers and marks academic achievements and other type of tests in order to measure the ability of a student in a subject or measures behavior in class or in school. What are these tests? Does a teacher really need to know that what is test? Yes, it is very important. ये बहुत अहम है। The teaching learning process remain incomplete if a teacher does not know that how well her class is doing. एक जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो नामुकम्मल रहता है जब तक एक टीचर जो है वो अपनी क्लास का टेस्ट नहीं लेता, जब तक वो ये जान नहीं लेता कि उसकी क्लास कितना अच्छा कर रही है and to what extent her teaching is effective, और किस हद तक उसकी जो टीचिंग है वो मौसर है in terms of achievement of predefined objectives, जो पहले से तयशुदा मकासद होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको पूरा करने के लिहाज से उनकी टीचिंग जो है वो किस हद तक मौसर है। There are many technical terms which are related with assessment. बहुत सारी टेक्निकी इस्लाहात हैं जिनका ताल्लुक असेसमेंट से है। बिफोर वी गो एनी फर्दर, बहुत ज़्यादा आगे जाने से पहले, इट कुड बी बेनिफिशियल टू डिफाइन फर्स्ट व्हाट इज़ ए टेस्ट। हमें सबसे पहले टेस्ट जो है उसको डिफाइन कर लेना चाहिए कि उस व्हाट इज़ ए टेस्ट। ए टेस्ट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर बिहेवियर ऑफ ए पर्सन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। एक टेस्ट एक डिवाइस है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं बिहेवियर ऑफ ए पर्सन मालूम करने के लिए, फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, एक ख़ास मकसद के लिए। मोर ओवर ताहम इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है दैट टिपिकली यूजेस सेट्स ऑफ आइटम्स डिजाइंड टू मेजर ए डोमेन ऑफ लर्निंग टास्क। Tests are systematic method of collecting information that lead to make inferences about the characteristics of pupil or objective. A teacher must understand that educational test is a measuring device and therefore involves rules, administering scoring for assigning numbers that will be used for describing the performance of an individual. You should also keep in mind that it is not possible for a teacher to test all the subject matter of a course that has been taught to the class in a semester or in a year. Therefore, teacher prepares test while sampling the atoms from a pool of atoms in such a way that it represents the whole subject matter. Teacher must also understand that whole content with many topics and concepts that have been taught within a semester or in a year cannot be tested in 1 or 2 hours. In simple words, a test should assess content area in accordance with relative importance a teacher has assigned to them. It is believed most commonly that the meaning of a test is simple paper or pencil test, but nowadays our testing procedures have been developed and are practiced